वेलकम गाइस, वेलकम टू द स्ट्रीम। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी स्टोरी को होराइजन ज़ीरो डॉन के साथ। और लास्ट स्ट्रीम पे हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट मिशन किए हैं। एक उसमें मेरे ख्याल से मेन मिशन था और बाकी साइड मिशन भी थे और कुछ एरेंड्स वगैरह भी थे। तो आज भी हम सेम चीज़ करेंगे और देखते हैं कि आज स्टोरी में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो कोशिश करूँगा कि आज कोई ना कोई हम मेन मिशन भी करें। तो लेट्स गो, चलते हैं गेम की तरफ। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो एलॉय का कुछ रिलेशन था उस औरत से जो हमें जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन भी मिली है, और बिल्कुल एलॉय जैसी लग रही थी वो बंदी। और हो सकता है मदर तो खैर नहीं है वो, क्योंकि 300 साल का डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। जब वो थी और अब एलॉय है तो उन दोनों के बीच में 300 साल का डिफरेंस है, तो मदर तो नहीं हो सकती वो एलॉय की। हो भी सकती है क्योंकि उन्होंने, वो जो बंदा मिला था उसने बताया था कि क्रायोजेनिक सिस्टम भी वो लोग डेवलप कर रहे थे, जिससे कि बंदों को फ्रीज कर देते थे। फ्रीज करने के बाद फिर वो उठाते थे कुछ टाइम के बाद, कई 100 सालों के बाद। हो सकता है इस तरह एलॉय को भी रखा हो, बट ये पक्का नहीं कह सकते इस बारे में। तो वो रिलेटेड तो है एलॉय से वो बंदी। सोबेक नाम था उसका, सोबेक ही था आई थिंक, एलिजाबेथ सोबेक। और एक और बंदा था जो कि उसका बॉस था एलिजाबेथ का, और मेरे ख्याल से वही है जो बैड, जो आप कह सकते हो विलेन है इस गेम का। सो अभी मैं कलेक्ट कर रहा था यहाँ पे जितने भी पिकअप आइटम्स हैं। जैसे कि यहाँ पे वेंटेज पॉइंट था, ये मैंने पिकअप किया था। इसका छोटा सा एक मैंने क्लिप बना के इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना चाहिए। तो इस एरिया में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लियर करूँ सारा का सारा एरिया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं तो स्ट्रीम पे तो ये सारी कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। सारी चीज़ें रास्ते में जो चीज़ें मिलती रहेंगी वो मैं कलेक्ट करता रहूँगा। यानी कि मिशन के दौरान रास्ते में अगर कोई भी चीज़ मिलेगी तो हम डेफिनेटली पिकअप करेंगे वो। लेकिन स्पेशली स्ट्रीम पे मैं अगर किसी एक आइटम के पीछे जाऊँगा तो यार वो फिर मज़ा नहीं आएगा। ओके, जो मिशन अभी चल रहा है, गो टू द ग्रेव होरार्ड। ग्रेव होर्ड देख लेते हैं क्या क्वेस्ट है भाई। अच्छा, वही सेम मिशन चल रहा है। प्रोजेक्ट ज़ीरो डॉन के बारे में अभी हमने पता करना है, ठीक है। और उसके लिए हमें इस जगह पे जाना है जहाँ पे पहले यूएस रोबोट कमांड हुआ करता था। तो किसी तरह उन्होंने रोबोट्स को डिफीट कर दिया था एलिजाबेथ ने, और हमें वहाँ जाके पता लगेगा कि क्या हुआ, कैसे किया। हो सकता है हम भी कुछ कर पाएँ। ये जो मशीनों का आजकल, मतलब अब एलॉय के टाइम में ये जो मशीनों का आतंक चल रहा है, इसको भी ख़त्म किया जा सकता है अगर हमें ये पता लग जाए कि एलिजाबेथ सोबेक ने कैसे किया था ये सब कुछ। तो ये सब कुछ हमें वहीं जाके पता लगेगा, जो यूएस रोबोट्स कमांड वाली जगह है। क्या नाम है इसका? द ग्रेव होर्ड। तो मेन मिशन है वैसे ये, लेकिन उससे पहले मैं करूँगा साइड मिशंस, या फिर एरेंड करेंगे। एरेंड तो कोई भी नहीं है भाई, साइड मिशन ही बचे हैं। हंटर लॉज। ओके, ये तो आर्मर वाला है
और ये तो भाई क्या ही करूं इसका। ओके ये लेवल 30 है, मेरा स्किल लेवल है कितना वैसे? 30 हो चुका मेरा। अभी फिलहाल के लिए तो यही कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे है ये। एक सेकंड एक सेकंड। वीसिंग कहाँ से ऑन हो गया भाई? अच्छा फालतू के आइटम बेच देते हैं भाई। एशियन टूथपिक हो भाई साहब। नाइस जगह बन गई। अब कुछ बाय कर सकते हैं। ये चाहिए मेरे को, इसके लिए थंडर जा हॉट चाहिए भाई। थंडर जा हॉट कहाँ से लेके आऊं मैं? Okay, let's go. Leave the rest. Meridian. Hawk Bradavin Khan And now Padish, they've murdered our captain. cherished brother, and Sunhawk Talavad Khan Padish, beloved father. Let their memory and sacrifice be a beacon for all hunters, all people to follow. Look, a memorial to my father and brother, and all the men who died in the Sun Ring. You made this possible, Aloy. Thank you. So, what's it like to be Sunhawk? It feels like sunrise after a long night. I'm in your debt. You'll always have a special home here. If you want it. What happens now, in the lodge? As Sunhawk, I've made sure we invite prospective members based on ability and drive, regardless of card your blood.
This lodge will be a stale bastion of the old regime no longer. वैसे मेरे को फ्री पास मिल जाना चाहिए क्योंकि भाई मैंने इनका जो भी होता है कंपटीशन कह लो या रिचुअल कह लो उससे हट के इसकी भी हेल्प करी है तो मेरे को तो फ्री पास मिल जाना चाहिए यहाँ पे. What was that prayer you were saying when I first came in? I didn't hear all of it. O great sun, make treaty with the moon to give our fallen quiet rest. Furnish them with the armor of your brazen heat. Give them shafts of sunlight for spears. Illuminate the path to the skies for each one of them. Hawk Gravid Khan Morza, Hawk Sarav Khan Pir, Hawk Usalin Karn Jagir, Hawk Kulasiv Khan Savali, Hawk Bradavin Khan Padish, cherished brother, and Sunhawk Talavad Khan Padish, beloved father. Let their memory and sacrifice be a beacon for all hunters, all people to follow. Well, congratulations, Talana. I should get going. Thank you, Aloy, despite the Nora. May you always take your prey. रेड वॉक कंप्लीट हो गया. वेरी नाइस. इसके अंदर मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ. Sometimes you just have to sit back, take a breath, and make the वाओ. ये भी एक तरीका था भाई क्रॉस करने का. Yes, yes, you're very friendly. Wondered, are all your kind hunters and fighters or just a few? Don't care about the tribes yet. Okay, well. ये कौन बजा रहा है? आवाज कहाँ से आ रही है? ये बजा तो कोई भी नहीं रहा. फ्रॉड है भाई. Only the finest goods here. See for yourself. तो भाई इसके अंदर जा ही नहीं पा रहा हूँ. The Sun Faith. क्वेस्ट में देखते हैं हम साइड मिशन में क्या क्या बचा भाई साहब. ये 30 वाला है, बाकी दो तो मैं अभी करने ही नहीं वाला. पावर सेल एक ही अभी फिलहाल मेरे पास. मेरे को 2 चाहिए पावर सेल. तो पता नहीं कहाँ पे मिलेंगे वो. ये है लेवल 30 का फ्रोजन वाइल्ड्स. ये कर लेते हैं फिर, क्या बोलते हो, या फिर साइड मिशन करें क्योंकि एक सामने मिशन ये भी है. You're Nora. I'm the mournful Naman. My apologies that we meet like this. Like this. In grief. You hold yours close, like a talisman. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost to the Sun Ring? No. I know about the Red Raids, but the Karja owe me nothing. I see.
Well, I could use the help of a strong-willed outlander. Then I would owe you very much indeed. These people seek to honor their loved, their lost, with their own voices, not mouthing Carja rituals to Carja stone. But there are obstacles. And while Meridian holds its breath for any disturbance, these robes only tie my hands. What kind of obstacles? The first pilgrim is an Oseram who seeks to visit the Shrine of Kings on the road to the city. He waits there now, forbidden to enter by an old sun priest who suffer no heathen. This Utaro lost her companion on the edge of the jewel, at a pool where snap moths gather. The shrine was built there to ward off the machines, and its effectiveness leaves much to be desired. And the Manuk would paint a mark on the sun's climb, a call to the machine spirits, I understand. एक फोटो तो बनती है भाई इसकी जैसा भी लग रहा है फोटो तो बनती है सर They need no beckoning. Glint hawks perch there, drawn to the spires shining. So, clear the machines out of 2 shrines and move a priest out of the other. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. Naman, rituals and prayers can't bring back those who are lost. No, but it can help those who grieve to find themselves. It can lend them strength and hope, like a new sunrise. I didn't think your priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind. We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the Red Raids? Yes. And the sacrifices that came after. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Carja are more concerned with what is tradition than what is right. Huh. Maybe the Carja and Nora aren't so different. You're disappointed with the Sun Priests, but you still wanted to be one? I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches. Even he couldn't turn me away, and how he tried. In the end. He said, when we were loved, our robes were dyed in cinnabar. Now they are stained in blood. How so? Our robes are handed down to us. Most of the old priests fled rather than be seen in the glare of a new sun. And so we are left to wear their sins. For me, at least, they hang heavy. Where is your brother now? He waits for me on the trail of the sun, I hope. He spoke out against the sacrifices. For a priest to question the Sun King's will, his punishment was worst of all. You lost someone you loved too. I'm sorry. No, not lost. When I took on these robes, I found his memory. I'll do what I can to help those in mourning. To honor their memories is to honor us all. Honor the fallen. Go to the Shrine of Kings. Lake Shrine. Sun's Climb. Level 16 का है भाई ये तो कर ही लेते हैं फिर ये स्किल पॉइंट मिल गया 3 और कोई बढ़िया सी स्किल ले लेते हैं भाई ये वैसे अच्छी थी
ये अच्छा है वैसे यार ये। ये भी अच्छा है। अभी फिलहाल के लिए ये कर लेते हैं। और ये कहाँ पे है भाई? 3 है ना ये मिशन, मेरे ख्याल से एक मिशन के अंदर 3 है शायद। अबे कौन सा दिखा रहा है क्वेस्ट यार? ये 3 है। ओके, आज अगर हल्की सी आवाज़ आ रही हो, कोई पीछे से बैकग्राउंड नॉइस, तो उसका मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी पूजा चल रही है। आज जन्माष्टमी है तो इसलिए लाउड स्पीकर वगैरह चल रहा होगा। इस साइड है भाई, एक तो इस साइड है और ये ऊपर है। This must be the sun's climb, where the Banuk wants to paint his mark. ऑलराइट, यहाँ से तो मैं चढ़ पाऊंगा। Scrapes. मेरे को लग रहा है कोई चढ़ने के लिए जगह होगी स्पेशल, तो ढूंढनी पड़ेगी अब। और मेरे को लग रहा है कि ऊपर कुछ ना कुछ है यार, आवाज़ आ रही है किसी मशीन की। कोई परिंदे हैं मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसके ऊपर चढ़ेंगे कहाँ से? ओ भाई साहब, चढ़ने की तो कोई जगह ही नजर नहीं आ रही मेरे को। वेट, कुछ ना कुछ वो तो है वहां पे ऊपर। या तो मैं मिस कर गया हूँ कहीं पे चढ़ने की जगह।
ये है कुछ। ओ भाई वहाँ पे छुपा के रखी हुई है चढ़ने की जगह। वाह डूड, अब किस साइड जाना चाहिए? दो रास्ते हैं, ये नहीं पता मेरे को। किल द ग्लिंट हॉक्स, 3 मार रहे हैं। ओ भाई ये घेरा। इसको कैसे मारूं यार, ये तो ऊपर बैठा हुआ है। इसने वैसे देखा नहीं अभी तक मेरे को। एक तो मर गया। भाई नीचे आएगा ये, उड़ने दो। दो गए, तीसरा बच्चा बस ये उड़ रहा है हवा में मजे से। फ्लावर भी है, फ्लावर ले लेते हैं यहाँ पे। You're a question waiting for an answer. और फ्लावर हमेशा यही मिलता है, ये जो ग्लिंट हॉक है ना, इनके ठिकानों पे। अब इसको मैं कहाँ से मारूंगा? अच्छा इस तरफ ही जाना पड़ेगा। ओए ओए नहीं भाई, डूड ज्यादा जल्दी कर दी मैंने। ओके किस साइड से था ऊपर जाने का रास्ता? यहाँ पे होना तो चाहिए भाई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई।
एक मिशन देख लेता हूँ, हो सकता है कि दो, हाँ 2 मर चुके हैं भाई, एक ही मारना सिर्फ, ये रहा, इसी को मारना। नाइस, ये कौन है अब? You were a better hunter than I. I'll paint the mark while the spirits of the Glinthawks linger. There'll be more where they came from. Yes, there will always be more machines. Their spirits find new bodies, but we only last as long as memory. That's why I must leave the story. A monument to our vanished shamans. नाइस, फोटो तो बनती है भाई। एक फोटो तो बनती है भाई। To the wisdom the Karja bled from us. The machine oil in the paint will preserve it. Preserve their memory against all that was cut away. You have my thanks, Hunter. ओके, ये रास्ता है भाई यहाँ पे नीचे जाने का। मैं पता नहीं कहाँ से चढ़ के आया हूँ। एनीवे, यहाँ पे और कुछ है कलेक्टिबल। भाई वो जो 2 मारे थे उनको मैं लूट भी नहीं पाया। मैंने कहा बाद में मैं लूटूंगा, मेरे को क्या पता था भाई मैं ही गिर जाऊंगा नीचे। दूसरा कहाँ पे है? ये रहा। स्नैप माओ, इसी को मारना है क्या? ओके, गो टू लेक श्राइन। हाँ, यहाँ पे बोलेंगे अब मारो इनको, 2 या 3 को। This is where the Utaru wanted to say her goodbyes. 2 मारने हैं, ओके।
इसके ऊपर छुप के हमला करना होगा मेरे को। इनकी कमजोरी देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से फायर है इनकी कमजोरी, जहां तक मेरे को याद है। बॉडी पे फायर है, फिर टीयर है। टीयर है कहाँ पे वैसे? वो कैसे हमला करूं इस पे? पानी में है तो। ओ भाई 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 भाई, छुप जाओ फटाफट। आजा इधर आजा। भाई दोनों ही आ गए थे, एक आता तो मैं संभाल लेता। तू आजा भाई। यही तो मैं चाहता था, इसको कंट्रोल कर लूं, पर ये फिर दूसरे से लड़ेगा मेरे लिए। जा भाई लड़। लड़ बे, मेरे को ही जाना पड़ेगा। आजा भाई लड़ ले। अबे लड़। शाबाश। वेरी नाइस। अब मैं इसको भी मार देता हूँ।
एक मिनट, फायर वाला एरो कहाँ है? वेरी नाइस, हो गए 2। दूसरा कहाँ पे पड़ा था? हीरा। ऑलराइट, थोड़ी सी हेल्थ ले लेते हैं यहाँ से। अपग्रेड के बाद तो भाई थोड़ी इजी हो गए ये मशीन्स ना, इनको मारना। अदरवाइज नहीं तो बहुत डर ही लगता रहता था, क्योंकि इनको डैमेज होती नहीं थी बिल्कुल भी। तो थोड़ा मेरे को भी नहीं आइडिया था भाई कहाँ पे मारना चाहिए इनको। नाउ तीसरे वाला इधर है, और ये कितनी दूर है देख लेते हैं एक बार। तो ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल ही चलते हैं। फास्ट ट्रैवल भी कर सकता हूँ मैं, बट लेकिन करूँगा नहीं। करप्टेड जोन है मेरे ख्याल से आगे। अब इस साइड है, हाँ। ऑलराइट, तो मशीन तो नहीं आसपास वैसे। Got one. भाई ये कैसे गिर गया? Fishing? I'd say the cake. पूरी मिशन है क्या, मेरे को समझ नहीं आया। मतलब वो जो बता रहा था ना कि भाई करना क्या आपको मिशन के अंदर, वो प्रीस्ट जब बता रहा था, मेरे को आ रही थी नींद, पता नहीं क्यों आंखें बंद हो गई मेरी। बात समझ ही नहीं आई बंदे की। ये कौन है भाई? Oh my. Sure as the sun's rising, you're an aura. और कितनी दूर है भाई? इधर है क्या वैसे? Welcome to the Sundom, stranger. Sorry, I have no news that would interest you. वो भाई ऊपर जाना है।
that surprise. I met Honora when I was a child. All I remember is how heavy her bow was. I've seen better. कुछ ज़्यादा साल करने के लिए ये क्या चीज़ है? बस एक ही चीज़ है, बाकी तो काम की आइटम है। Shame a woman became Sunhawk of the Lodge, but at least she did it to honor the men of her house. This must be the Shrine of Kings that Naman told me about. He shouts at me. Osram slaves built that thing. We deserve to have a look. It may have been meant for the Mad Sun King, but it's ours now. It's a public monument, not his private shrine. ओके, यही है मेरे ख्याल से जो वो परेशानी खड़ी कर रहा होगा। You won't get in there. That dried up old prune in a robe sees to that. I can be persuasive. But what does an Osram want with a Karja shrine anyway? It reminds me of someone. Gone 2 years now. But what does a girl like you know of loss? Try me. I had a lover. Worked on monuments to their bastard king. Then he gave them a show in their sun ring for good measure. The Karja gave me back his broken bones, but what use are they? They won't build again. They won't make me smile. And seeing a statue of the Mad Sun King will? I need to see his work again. The marks his hands carved. The set of the metals they hammered. That's the soul of him. But that shriveled up old priest won't let me near it. I'll see what I can do. यार ओमकार गेमर्स भाई, welcome to the stream. He shouts at me. Osram slaves built that thing. We deserve to have a look. Turn away, child. The abiding Jahaman wishes to be alone in his retreat. If you want to be alone, go someplace else. Others want to pray here. Defile it, you mean? Yet another debasement of what was once pure. Truly, our tribe has lost the light. Our king is false, our temple is corrupt, and our soldiers weak. The sun hastens across the sky for shame. So the Karja have become impure? What does that even mean? Is Meridian not meant for those who built it, who made it great? It was pure before outlander squatters took it over. You mean Meridian was pure when the outsiders were in cages or dying in your arena? The sun is pure, child. It is not our place to question its divine will, only to act upon it. I thought Avad taking the throne was the sun's will. The boy dishonored his father, dishonored us all. To kill a sun king. What shadow, what twilight time he brought upon us. And how many more would the Mad Sun King have killed if Avad hadn't stopped him? The sun called for blood. There was no choice but to obey. You called the temple corrupt, but aren't you one of its priests? They call themselves sun priests, but they have no authority. Youths and sycophants all. Yet those who gave their whole lives to the sun's service are shamed and ignored. So that's what this is. A tantrum? A cry for attention? You know nothing of our rights, and yet you dare to insult me. Why do you think your army is weak? Because you're not at war with everyone?
A Karja throne relying on forged dirt mercenaries? Preposterous! The so-called liberation was nothing but a purge. Our most blessed warriors, chased out of the city, exiled to Sunfall and the Forbidden West. Our tribe is torn. The ones who walked in light now go by shadow. And yet everyone but you seems happy they're gone. I'm done arguing with you. Stay or go, but I won't allow you to keep others away. I am here by the will of the sun. You don't believe in the throne, the priesthood, the army, or the city, so I guess you have no authority here. I have the authority of the sun. Then call it for help. No one else will listen. There'll be a reckoning. You'll back away from it. There's plenty of work here, but none I like. निकल क्यों नहीं रहा ये? Fancy decorations everywhere. Downright embarrassing. Smoke and sweat. That's how you know you've done a good day's work. He gave them the best work he'd ever do. And look at it now. They defaced it because they hated what it stood for. They defaced a thing slaves like him lived and died for. Slaves they've already forgotten. Short-sighted bastards, the lot. If they thought their son set off this bridge, they'd jump after it. I thank you for honoring my wish. I hope you can find peace. I wouldn't know what to do with it, any more than the Karja do. Here's to Avad, huh? He may dress a bit too fancy, but he's made a place in the Sundom for the Oscar. Good to see you. एक और मिशन कंप्लीट। ओ भाई साहब को स्किल पॉइंट ही दे दो, इतनी मेहनत करी। ओके नेक्स्ट क्या है फिर? अच्छा ये मिशन अभी चल रहा है भाई। Stay busy. यहाँ पे है बंदा। कोई मशीन तो नहीं दिख रही मेरे को आसपास, बट फिर भी ध्यान रखना चाहिए, कहीं से भी टपक पड़ते हैं भाई, इनका कुछ नहीं पता। अभी तो आया था मैं यहाँ पे मगरमच्छ को मारने। When we fled from our cages during the liberation, I tore through this clearing, thinking my friend was behind me. I kept running, but here she remains. Thank you for making it safe for me to return. I don't want to rush you, but it won't stay safe for long. I understand. I've done this before in waking dreams. In the pool, I'll find the bracelet of seeds she dropped when she fell. The seeds will be split, escaped, grown wild. She's passing from my memory into the jungles.
I'll tell her it was I who died here and became a stranger in our own land, and she who still lives in every time of planting, of rains, harvests. What is it? There. Her bracelet. And I thought she was behind me. But there's only my reflection. Do you need to be alone? For the first time, I am. दुखी है बंदे भाई, अकेले छोड़ दो। ओके आगे बढ़ते हैं। हट जा भाई, दुखी मत कर। बहुत पावर है मेरे पास, मार डालूंगा मैं। वाह कुछ अच्छा मिला भाई इससे। टर्की बोन टर्की बोन तो चाहिए नहीं भाई मेरे को, पता नहीं कुछ और बोन चाहिए थी, कोई पता नहीं बोर की बोन चाहिए आई थिंक। नहीं है इसके पास। इधर गया। हाँ इसके पास कुछ अच्छा है भाई। रैबिट बोन ये भी चाहिए थी मेरे ख्याल से। देखो कोई अपग्रेड वगैरह हो। हाँ यही तो चाहिए। अबे हो तो गया, और कितनी बार। अच्छा इसकी अपग्रेड अवेलेबल नहीं है और भी, ये फुली अपग्रेडेड हो चुका है। वेरी नाइस। इसके लिए और क्या चाहिए होगा मेरे को? बोर स्किन, एक बोर स्किन चाहिए बस। ठीक है वो तो मिल जाएगी इजीली। बोर बोन मिली है, स्किन चाहिए थी। देख लेते हैं कोई अपग्रेड अवेलेबल हो तो। नहीं है। पता नहीं आज हल्की सी ना स्टटर हो रही है गेम, क्या रीज़न है मेरे को ये नहीं समझ आया। अब मेरे ख्याल से स्ट्रीम पे तो नहीं हो रही होगी ये,
लेकिन मेरे को यहाँ पे फ्रेम ड्रॉप दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं दोबारा से ना लॉन्च कर लेता हूँ गेम को। ये मिशन कर लूँ, उसके बाद लॉन्च करते हैं फिर। Got no stomach for killing other culture. Check out these rooms. Yes, yes, you're very friendly. We lived under the same sun all this time. So you've come back to the temple. I was invited back. The priests wanted to hear what I had to say about reconciliation with the other tribes. They're listening. At least they've begun to listen. There's a distance between ears and deeds. Because of what we did? What you did. It was for the mourners. I think it helped them. You set them on the path. You can't know what their journeys hold. Such is the priest's lot. Perhaps a red robe would suit you. Not me. Besides, your temple doesn't even take women. We would be richer if we did. Go in light, my friend, and let the sun cast your way. Thank you, Naman. Where I'm going, I could probably use all the light I can get. ये भी भाई डालो को मार के ऊपर से बंदा ना अपनी होशियारी दिखा रहा था, मतलब अपनी रिचुअल से बोल के तेरे लॉय ने भी उसको सुनाई दिया। Anyway. I have nothing to trade. We should march on Sunfall soon as we can. भाई इसका मुखोटा सा कैसा सा मुकुट बड़ा सही है। Anyway, यहाँ पे मैं गेम कर लेता हूँ दोबारा से लॉन्च, क्योंकि थोड़ी सी स्टटर हो रही है ना, इसलिए। जस्ट वेट, अभी लॉन्च किया मैंने गेम, अभी हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टीम का भी कोई अपडेट वगैरह आता है, तो उसकी वजह से भी कई बार स्टटर शुरू होती है। अब ये नहीं पता मेरे को स्टीम का कोई अपडेट था, अभी तक तो इसने कुछ दिखाया नहीं ऐसा। तो गेम अभी शेडर्स कर रही है ऑप्टिमाइज, तो जैसे ही वो हो जाते हैं फिर गेम की तरफ चलेंगे।
ओके, मैं आर्टिकल देख रहा हूँ वर्ज का एक, जिसमें कि इन्होंने इस बार जो गेम कॉम की गेम्स की अनाउंसमेंट है उसके बारे में सारी बता रखी है, कौन कौन सी गेम्स अनाउंस हुई हैं। तो एक तो मिडनाइट सन्स, ये मेरे ख्याल से मार्वल वालों की है, मार्वल गेम की। यप। और 1 सितंबर को ये मेरे ख्याल से अपना ट्रेलर दिखाएंगे ये लोग। उसके बाद हेलो इन्फिनिट मल्टीप्लेयर जो है, इसका भी लॉन्च डेट का पता लग गया। तो ये दिसंबर 8 को लॉन्च होगी। और होराइजन फॉरबिडन वेस्ट ये 18 तारीख को लॉन्च होगी, 18/2 यानी कि 18 फरवरी 2022 को। तो ये काफ़ी अच्छी 3 गेम्स थी जिनके बारे में पता लगा। और उसके बाद फिर सबसे बड़ी गेम थी जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी, वो तो सेंट्स रो, जिसका कि रीबूट हमें देखने को मिलेगा। और ये 25 फरवरी को होगी मेरे ख्याल से। और ओपन बीटा आ रहा है कि अमेज़न की नई गेम का। ओ भाई, न्यू वर्ल्ड नाम है इस गेम का। अमेज़न भी गेमिंग में आ गया। ओके। डेथ स्ट्रैंडिंग का एक डायरेक्टर्स कट रिलीज हुआ है, उसका प्रीव्यू दिखाया गया। ओके। स्टालिनग्राद डेमो, वैंगार्ड गेम प्ले, कॉल ऑफ ड्यूटी। और कॉल ऑफ ड्यूटी कब होने वाली है? 5 नवंबर को ये होगी रिलीज, आई थिंक। तो बहुत सारी गेम्स है जिनकी इन्होंने अनाउंसमेंट की है। और एक बहुत ही अच्छी गेम है, सीफू करके नाम है इसका। और रिलीज डेट इसकी निकल के आई है 22 फरवरी की, पीसी पे और प्ले स्टेशन पे। ये मेरे को काफ़ी एक्साइटिंग लग रही है गेम, बट अब पता नहीं ये आएगी सिर्फ एपिक गेम स्टोर पे ही आएगी, तो उस पर तो भाई क्या ही करे। अब एपिक गेम स्टोर पे तो गेम्स लेना ही बड़ा मुश्किल है। पता नहीं क्या उनका मांगते हैं, वो क्रेडिट कार्ड पता नहीं क्या मांगते हैं। तो चलते हैं गेम की तरफ। गेम हो गई है लोड। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हेलो जो है उसका डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ खेलना चाहता हूँ, जो मल्टीप्लेयर उसका आएगा। पर उसका जो स्टोरी वाला वर्जन होगा भाई, अगर वो महंगा ज़्यादा हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। अदरवाइज मैं खेलना चाहूँगा डेफिनेटली। दिसंबर को आएगी, 8 दिसंबर को। और उससे पहले वो आने वाली है फार क्राई 6। और फार क्राई 6 बहुत महंगी गेम है भाई। 4000 की, 4 पता नहीं 5000 की गेम आई थिंक। इतनी महंगी गेम खेलना मैं डेफिनेटली चाहता हूँ, बट ये बहुत महंगी गेम है यार। ऑलराइट, अभी ठीक चल रही है गेम। तो यहाँ पे एक और न्यू क्वेस्ट है, ये भी देख लेते हैं। तो इस सीरीज के क्वेस्ट तो खत्म हो जाएंगे, नहीं एक और पड़ा है यहाँ पे। Able-bodied adventurers. Hi there, Outlander. Name's Vilgund. Did you come to the city looking for work? Oh, good shards. Enough to buy garb more becoming of your... Okay, stop there if you want me to hear you out. I only meant a well-molded woman such as you. Molded. I heard an interesting rumor about a Banuk camp. Tame machines, the rumor said. So I hired men to investigate. Just investigate, that's all. Those Banuk are canny, too canny. I paid up front. Well, half up front. I've had no word back. So now you're hiring someone to find the last men you hired. They're a sunk cost. This rumor's worth more to me. So is there any more to the rumor about this camp?
The last bunch just wanted to know about the reward. Hey, you're a smart one. This camp isn't even big enough for a name up where the snow won't thaw. They say the Banuk there live alongside machines. Peaceful as you like. Keep them, use them, sing to them. If it's true, if we learn how they do it, think how valuable that would be to all the tribes. When you say valuable, you mean they'd pay you for it. Girl, I'm not made of straw. What can you tell me about the Banuk? The Banuk women. Snow witches all. Cold eyes, cold... They choose to live up there in the ice. Trying to have a conversation, it's like chipping them out of the stuff. They prefer machines for company. That's why I'm putting my shards on this rumor. Then they might not want outsiders to know about this place. Their mystic act. No care for possessions, for luxuries. Pile of slag. Those people bargain harder than the winter frost. Are you some kind of merchant? You don't seem to have any wares. More of an explorer. But you send other people to do your exploring. All right, more of an opportunist. Girl. Nora girl. Huntress. We live in a world of opportunities. Risky opportunities. But why should risk stand in the way of a lucrative prospect for the likes of me? All right. I'm more of a gambler. If I did look into your rumor... You won't need to climb up the shoulders of the world for it. It's on the edge of Banuk land, beneath the anvil of the moon. And you look like you know your way around the savage east. The east. If it's true they walk among machines without fear in this camp, well, you can't miss that, can you? Payment on return. वो भाई कितनी दूर है मिशन? भाई बहुत दूर जाना पड़ेगा मेरे को माउंट चाहिए होगा इसके लिए फिर ओके माउंट कहाँ ढूंढूं मैं कुछ अच्छा मिला भाई इससे टर्की बोन
इससे नहीं कुछ मिला, पहले इसको मार लूं भाई। ऑलराइट, माउंट ढूंढो भाई जल्दी से जल्दी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है भाई, दूर दूर तक कोई नहीं है भाई, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं। ये नहीं है एक मशीन, वॉचर भी है, वेरी नाइस। मिला कुछ अच्छा। ओके, कुछ है भाई अपने पास क्राफ्टिंग के लिए। हाँ, एक और है, वेरी नाइस। तो ये भी कंप्लीट हो गया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं ये देख लेता हूँ मेरे पास अबे कहाँ से निकलूँ मैं, मशीन से इधर तो। अब यार अटक गई, बताओ। जब तक ये लड़ रहे हैं मैं निकल जाता हूँ। मार भी दिया भाई। मेरे को इनको किसी को ना वो ओवरराइड करना पड़ेगा। क्योंकि यही मेरे लिए लड़ सकता है। निकल ही जाओ भाई, इनसे पंगे लेने की जरूरत ही नहीं है। They're scanning for me. Nice. इनसे बच के निकलना पड़ेगा। ओ भाई कुछ ज्यादा ही वाइट नहीं है ये।
वाह, बर्फीला इलाका आ गया। ओके, मशीन सी मशीन है चारों तरफ। चार्जर, ओके। मेरी जो आउटफिट है वो स्टेल्थ के लिए अच्छी है, इसलिए मेरे ख्याल से ये मेरे को सुन नहीं पा रहे। अदरवाइज भाई इनके जितनी पास से अब मैं निकल रहा हूँ ना, इतनी पास से तो बड़ी आराम से देख लेते हैं। ये सारा कमाल इस आउटफिट का, इन्होंने सुना ही नहीं मेरे को। और उड़ने वाले परिंदे भी हैं। ओके, कैंप फायर है इस तरफ। रहने दो भाई, कैंप फायर जाने की जरूरत ही नहीं है। इनको मैं बाईपास कर सकता हूँ। कोई भी नहीं है भाई। एक मिनट, इसको मैं वो कर लेता हूँ, ओवरराइड कर लेते हैं ताकि ये दूसरों से लड़ता रहे। नाइस, लड़ ले भाई तू। ये कौन है भाई? बनूक वेंडर। This has to be the Banuk camp that Logan told me about. See what happened to the other mercenaries he sent. The machines are docile. It's like they've already been overridden. ओ भाई, इन्होंने कंट्रोल कर रखा मशीन्स पे। For themselves. The shamans would be wise not to let them. Some other Weirix after our herd. Claim first blood, but it'll require cunning. इतनी ठंड में देख रहे हो? Was she exiled to wander? विदाउट स्लीव की डाली हुई इसने, पता नहीं क्या। गरम खून है भाई। राइट, मेरे को बात किससे करनी है भाई? कौन है तुम्हारा सरदार? Banuk lands are harsher than these. Hunting here is
ओके, बेचने की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा वो कह सकते हो कि स्पेस आ गया। अब खरीद जरूर सकता हूँ मैं, इसके पास कुछ है ही नहीं भाई बेचने के लिए। गरीब है ये मर्चेंट यार। ऑलराइट, कौन है भाई बंदा, किससे बात करनी है मेरे को? कहाँ पे है ये, दिखा क्यों रहा है? इन्वेस्टिगेट द बनू कैंप। क्या इन्वेस्टिगेट करूँ भाई? Snow. It's not getting any warmer out here. एक मिनट, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। To find an explanation for the behavior of the machines there, talk to the Banuk. ओके, किससे बात करी जाए? यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। To see these machines up close like this, it's grazer dung. I'm sorry? Frozen grazer dung. This Ravager led me here. I chased it down from the rivals, where it killed a great ice hunter. Tore him in two. भाई सही फोटो आएगी इसकी तो। The challenge I accepted. But when it reached this camp, the Fury left it. Isn't that a good thing? Tikuk says it's a gift. Pfft, what is a gift but a reward that you didn't earn? The machines are meant to challenge us. Now I'm stuck here guarding the shamans. ये भी अच्छा पोज है भाई, बहुत अच्छे पोज दे रही बंदी यार। What are we doing here? Every idle moment is another mile between us and the herd. I can feel myself growing old. I'll not let this Ravager out of my sight. Shaman, you're trying to understand the machines here too? Yes, Nora. And taking my time with my studies. Between you, me, and the spirits, I appreciate the peace. Not just from the machines. There are many changes in Ban-Ur. The hunters and shamans bicker without end. What about? How best to deal with a harsher world. The hunters, they don't want it back the way it used to be. And we shamans find ourselves able to explain less and less. So many are exiles now, sent to wander. Here, no one argues. So, I welcome mystery. Swift arrows and sharp blades. इसके ऊपर बैठ सकता हूँ भाई? बैठने दे।
ये भी शांति है। अगर मैं इनको मारूं तो क्या होगा भाई, मैं नहीं पता करना चाहता। पता लगे सारी हमला कर दें मेरे ऊपर। Feel sharp. When the machine spirits resist, it forces the Banuk to prove our worth. But in the grove, they're docile. It feels unnatural. और किससे बात करूं मैं? किससे? Greetings, Nora. I am Tikuk. Shaman, I've never seen anything like this. The blue light is strong here. My people traveled far from the heights of Ban-Ur to experience it for themselves. The blue light? The light of the machine spirits. It is all around us. It settles upon us. This is how it used to be, before they grew angry. I know about the derangement, but I didn't think the machines were ever this calm. What is it about this place? We don't really know. We sing and we listen to the machine songs. Tikuk, have any other Outlanders come through here recently? Some Asaram, yes. They were convinced the machines were malfunctioning, as if machines were mere devices in need of repair. Well, that is how the Asaram see the world, is it not? They ate with us. Then, when they were satisfied there was nothing they could explain, they left with the Northern Light. The machines sing to you? To each other. You are a hunter. You must have heard their communions and hymns, their calls and cries. We're not meant to understand, but we shamans try to interpret. What is the song that angered them so, that turned them upon us? What song soothes them? Does it thrum in the air here, just outside of hearing? How can we heal the machine world? What's with the big guy? I was drawn to this place in a storm. At first, I thought the keening was the wind, snapping off the mountain's frozen face. But no, it was the Thunderjaw's song. I found it crouched on its haunches, its metal unmoving, and I took shelter beneath it. When the storm cleared, its singing done, perhaps the spirit left its great shell, or perhaps it slumbers and remains. So we have not stripped and gleaned this one. We treat it with the care it is owed. Do you mind if I look around more, Tikuk? Speak, trade, listen. You are welcome. No harm will come to you here. So it's not the Banuk that are doing this. There's something about this place. They can't see it, but maybe my focus can. Anyone can commune with the machine spirits as the shamans do. Long health and hard eyes. ओके तो ये कह रही है कि इस जगह में कुछ है। अच्छा ऊपर है कुछ। There, a signal. And the source is at the top of the mountain. I'd better look into it. तो भाई ये नई चीज पता लग रही है। This is how the Banuk must have gotten up and down the mountain. कैसे जाऊं मैं? अच्छा यहाँ से। पता लगे भाई मारने के लिए आगे मेरे को कहेंगे हमारी
इस पूजा वाली जगह पे तुम छलांगे मार रहे हो, चढ़ रहे हो ऊपर, बेशर्म लोग। Talks are just sign, I guess. रेडियो सिग्नल कहाँ पे है? We on your chopping shard purses. Did Vilgun send you? I guess shards can buy a conscience. Never mind that. Nora girl, you have to stop the others. Up ahead, we snuck up here. Uncovered some kind of ancient device, plain as an anvil. That's what affects the machines. The other bungheads voted to take it to Pitchcliff for auction. But it's taken a beating already. Like it dropped from the sky. We tried to stop them digging it out. Without that thing up here, those Banuk will be massacred. I'll stop them. You two get out of here. It sounds like you've already done enough damage. Well, that's a fair appraisal. मशीन कोर नहीं उठाया? उठा लिया भाई। You let the rope slip for, you bunch of chuff skulls. The slack was on your end. I think it's. What have you done? Who are you? You're not one of those Banuk. Too late. Let me look at it. Hold on. This was our delve. We did the work. You want to put your axe in? What's this thing worth to you? I don't know about this. This was your idea. You started it, you can finish. All right. Could be this thing's just scrap, but even scrap has a price. So I'll ask again, what's it worth to you? It's worth more to me than you are. You still want to negotiate? Forget it. All he's ever given me is black toes. They've made a mess of this. Okay, ये है क्या वैसे? Catastrophic malfunction. This is from long ago. And it's been sending a signal all this time. Fading out. I have to get back to the camp before the machines tear it apart. Okay. यही तो नहीं है कोई वेपन जो एलिजाबेथ काम कर रही थी जिसके ऊपर? नो आइडिया। और मैं यहाँ पे कुछ कलेक्टिबल ना हो भाई, क्योंकि मेरे को सेल की ज़रूरत है। पावर सेल वो ऐसी किसी जगह पे मिलेगा मेरे को लग रहा है। इधर क्या है, एक बार देख लेते हैं। ऊपर तो चढ़ नहीं सकता मैं, और ये एंटीना लगा हुआ ऊपर, पता नहीं किस लिए है। Look out below. ऑलराइट, मेरे को लगता नहीं है यहाँ पे कुछ होगा, बट मेरे को इतना पता है कि ऐसी ही किसी जगह से हमें वो पावर सेल मिलेगा।
और उस पावर सेल से ही हमारा आर्मर अनलॉक होगा, वो जो स्पेशल आर्मर है। एक मिनट, ये रास्ता कहाँ जा रहा है? अच्छा यहीं से तो आया था मैं। No, they've already started attacking. The hunt is back. Now what? The machines are angered. Keep your distance. Hunters, defend the camp. Do what you must. Yes. Roar and rend at me. I don't care. Now you'll hear my song, machine. A sharp song. At me. I don't fear it. Now you'll hear my song, machine. A sharp song. Side effects. He's not going to be happy about this. That was a little too easy. हट जा भाई। अच्छा, किससे बात करनी है मेरे को? I did it. Nora, did you know this change would come upon us? Not exactly. Although I know there is a lot changing in our world. This time it was outsiders. Those Oseram thought. The Oseram do not think. They will never understand the balance between us, between man and machine. Now the blue light has gone, and we are left with many songs. But more for mourning than gratitude. So what now? Will you go back to your homeland? When we teach the young to walk on shifting ice, we say, the secret is taking one step, then the next. Perhaps one day, we will understand the machine's mysteries. I hope so. Good luck, T-Cook. Return to Wilgun. ओके, कहाँ पे है ये क्या चीज़ है?
अच्छा, ये दूसरा मिशन था भाई। ऑलराइट, फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा यहाँ तो। ओके, पीछे यार बहुत तेज आवाजें आ रही होंगी। अब पता नहीं आप लोग सुन पा रहे हो नहीं। लाउड स्पीकर पे चल रहा है, भजन भजन चल रहे हैं। Had a bad dream last night. Remember, just a nagging feeling that something's going wrong. फ्रेम ड्रॉप हुए थे बड़े भयंकर। As Sunhawk of the Lodge. अभी क्या ये कहाँ पे लेके जा रहा है? ये क्या हो रहा है? फ्रेम क्यों ड्रॉप हो रहे हैं यहाँ पे? Able-bodied adventurers, Outlander, are you looking for... Wait, I know your face. You came back. How did we fare? Expensively. That's what I was afraid of. The tame machines. It's hard to explain, but there was a kind of signal that calmed them. Your men got greedy, so it's gone now. Gambling's a shoddy job, girl. I should have been a weapons dealer. That's steady work. Here, take it. The half I'd owed those hammer-handed chunks. Half? I finished the job. And what was it you said? Enough to buy a more becoming garb? What do you want? Carja silks? Ah, hoisted on my own purse strings. ऑलराइट, एक और मिशन हो गया कंप्लीट। ये एक बचा बस इस एरिया में, ये भी देख लेते हैं। Can I interest you in a reasonable share of a lucrative opportunity? डैमेज हुई है हल्की सी। पता नहीं यार यहाँ पे फ्रेम क्यों ड्रॉप हो रहे हैं। ऑलराइट, मेरे को लिफ्ट यूज करनी पड़ेगी भाई। फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं भाई बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या रीजन है। I just want a moment's peace. क्या ड्रेस है भाई बंदी की? Those clothes. Long march from your sacred land, aren't you? ओ भाई कुछ ज्यादा ही फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं।
ask me where to go if you're lost. I'm a guard. My family might still be alive, and you're going to stand here and do nothing? Tell me what happened to your family. Maybe I can help. By the sun, I fear they are all dead by now. I barely escaped alive. Machines. Vicious machines attacked my family's estate. Father sent me to get help. What kind of machines? Where did they come from? A Ravager. By the sun, how it cut down those guards, and a pack of watchers came with it. The Sun King warned us that he could no longer protect freeholds beyond the valley, but Father never saw this coming. Tell me more about the estate. My father owns a dozen quarries, and he's put his spoils into the estate. Fine tapestries, custom woodwork, silver fixtures. But what about the people there? Of course. Their lives are all that matter. My father and sister, plus a dozen guards and servants. I hope they survived. I'll see what I can do about the estate. You will? Oh, thank you. Oh, please, be careful. Those machines are deadly. Okay, fatal inheritance. Okay, ये कहाँ पे होगा? Oh boy. चलो अच्छा मैं इसी तरफ जाने की सोच रहा था. और यहाँ से आगे फिर वो टॉल नेक भी है. टॉल नेक है कि लॉन्ग नेक होता है, मेरे को ये नाम कंफ्यूज रहता हूँ मैं. तो वो कर लेंगे, उसके बाद फिर पूरा का पूरा एरिया ओपन हो जाएगा. उसके बाद मैं ऑफ स्ट्रीम में जितने भी ये कलेक्टिबल्स हैं ये इकट्ठे कर लूँगा, या अपग्रेड होंगे जो भी, वो करने की कोशिश करूँगा मैं. फिर जो मेन मिशन होंगे वो हम मेन स्ट्रीम में कर लेंगे, राइट? अच्छा वहाँ पे हो. ओके ये ऊपर है कहीं पे कुछ. वो कहाँ से है ये? ये नया था. पहले रस्सी पे चढ़ो फिर छलांग मारो उस तरफ. नाइस. अब कहाँ? ऑलराइट, कुछ है भाई यहाँ पे. क्या उठाया मैंने? अच्छा बनू का आर्टिफैक्ट. ठीक है.
और मेरे को लगता नहीं कि इसके ऊपर मैं जा पाऊंगा। नहीं, कुछ भी नहीं ऊपर। तो वापस नीचे नीचे कैसे जाएंगे? स्लाइड मार के मेरे को तो ऐसे लग रहा। एनीवे, मेरे को जाना वैसे उस साइड है। Might regret this. अरे नहीं रे, कुछ भी नहीं है। मैं भाई सही में गलती जा रहा हूँ। ओ भाई, ये कौन है? बंदूक। अच्छा, मेरे को अभी तक कहानी समझ नहीं आई, ये बंदूक लोग हैं कौन? That'll help. बहुत सारी ट्राइब्स है ना, तो कुछ समझ नहीं आता मेरे को कि कौन सा ट्राइब किस लिए है। भाई एक तो ये मैं मार्कर हटा लूं। नहीं नहीं नहीं, पहले ऐसे करते हैं, ये ले लेते हैं फ्लावर। कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे दूर दूर तक। तो मेरे को लग रहा है इस फ्लावर के आसपास वही परिंदे से भी होंगे जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा ही। लेट्स सी। वाह, क्या नजारा है। भाई को ये कूदने वाला भी होना चाहिए था ताकि मैं ग्लाइड कर पाऊँ यहाँ पे। ओ भाई, पता नहीं उचित होगा यहाँ से नीचे जाना या नहीं। Scrabbling a bit. नीचे मशीन्स भी हैं। ये बंदा कौन है वैसे? मर्चेंट है क्या ये? मर्चेंट है भाई। सेल करने लायक तो कुछ भी नहीं है। वेपन में देख लेते हैं। नथिंग। हाँ ये रे भाई, उड़ने वाले परिंदे। और इन्होंने हमला किया ना तो सभी आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे प्राणी हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फ्लावर होगा कहाँ पे वैसे? पूरा नाइस। सेव कर लेते हैं हम यहाँ पे। बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तो वही है
जो स्टार्टिंग में हम देखते थे ना दूर से, ये कोई मशीन आई थिंक बहुत बड़ी, और मेरे को इनसे बच के निकलना होगा। ये क्या चीज़ है? कैनन सा ये तो। ओके, मेरे ख्याल से ये वही है जगह जो यूएस रोबोटिक्स वाली जगह थी ना। ये बड़ी बड़ी कैनन्स लगी हुई हैं। ओके, कोई मशीन तो नहीं है यहाँ पे। ये टैंक है भाई। कोई फाइट हुई है यहाँ पे बहुत तगड़ी। फाइट नहीं कह सकते, वार कह सकते हैं कोई। और यहाँ पे थोड़े से फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं मेरे। ये कैसी आवाज है यहाँ पे? This must be the pass O'Toole was talking about, with Banuk territory just above. अरे भाई साहब, यहीं पे तो मिलेगा सेल। मेरे को सेल है यहाँ पे, पावर सेल। अरे भाई, और ये क्या है? ब्लू ब्लू। भाई वो तो नीचे जाने के लिए बोल रहा है, और यहाँ एक ऊपर जाने का भी रास्ता है। क्या करूँ मैं? नीचे ही चलना चाहिए मेरे को। फ्रेम ड्रॉप हो रहा है भाई। They're inside too. Battle. Frozen in ice and time. कुछ नहीं है भाई।
cannot run from ये बचा बस। Time to take a look around the room. Okay. मेरे ख्याल से यहीं पे मिलेगा मेरे को। अबे ऊपर मत चढ़। पावर सर यही है क्या? नहीं, नेकलेस है तो कोई। यहीं पे मिलेगा पावर सेल, मेरे को पक्का पता भाई। मैंने एक वीडियो देखा था उसमें। अब कहाँ पे मिलेगा ये नहीं पता मेरे को। I got some. Titan is through the defenses. Still on approach. Ah, crap. A live one. And it's pissed. We've got no mobility in here. It'll punch right through us. We hold the hedge at all costs. Then push back out. Are you getting this, Silence? Silence? वो कहाँ गया? Looks like quite an enduring victory we put our foot in today. Contact in 30 seconds. Hey, think that's enough time for Sobek to finish Zero Dawn? If this is really it, I gotta say, it's been an honor to serve beside these tanks. Here it comes. Brace for contact! Silence, you getting this? What is it? All these soldiers. They died here. People die all the time. Now keep going and find something interesting. पता नहीं क्यों भाई मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर जाके उसको देखूं। वो जो ऊपर था कुछ। I don't know man, देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप हो रहा है यार यहाँ पे। The snow sets in quicker than frost. भाई क्या जगह है? Be prepared. ये तो और ऊपर लेके जा रहा है। What are you doing, Aloy? This path leads to the cut. The Banuk have nothing to offer besides useless mysticism. The Eclipse won't stand idle while you waste time playing in the snow. Return to your task. I was thinking, Banuk shamans thread blue cables through their skin, right? Kind of like someone else we know, huh? So maybe the real reason you want me to stay clear of the Banuk is to stay clear of your past. It's the ancient past that concerns me, Aloy, not my own. Which is why you should stop prattling and get back to what matters. But as usual, you'll do as you wish. Touchy. What the hell?
पावर सेल चाहिए भाई, सारी जद्दोजहदी पावर सेल। ये क्या, कौन है? This one's a new predator. I can see the heat coming off it. शोक और करप्शन, ओके। ओवरराइड तो कर ही नहीं सकते इसको। मेरे को अपनी आउटफिट चेंज करनी पड़ेगी। शौक वाली को आउटफिट डाल लेता हूँ। ये कौन सी है? वैसे करप्शन के लिए ज़्यादा अच्छी है, बट ये भी ठीक है। अब और ये पहले से ही डैमेज्ड है, पता नहीं क्या रीज़न है। इसको या तो किसी से इसकी फाइट हुई है या गिरा भाई है कहीं से। साइलेंट स्ट्राइक नहीं होगी इसके ऊपर? अरे यार, अभी आया तो था। Let's make this quick. भाई क्या ये? रुक जा भाई, मेरे को लग रहा है इसके ऊपर फ्रीज ही करना पड़ेगा। भाई दूर निकलो इससे।
वेरी नाइस। भाई एक गलती हुई और उससे ठीक है, मेरे को गुस्सा आ गया। This one's a new predator. I can see the heat coming off it. अबे कहाँ फंसा दिया? क्या खतरनाक मशीन है भाई। अब नीचे नहीं आ रहा है। I can get out of this. मार अबे भाई स्क्रोचर, इसके बारे में क्या है जानकारी? अच्छा फायर है बॉडी पे, नहीं फायर इसकी स्ट्रेंथ है, फ्रीज है इसकी बॉडी पे, एयर और फायर। मुश्किल था भाई ये एनिमी। और मैं यहाँ पे करने क्या आया हूँ वैसे बाय द वे पता नहीं, मिशन छोड़ के मैं इधर आ गया। हाँ वो मैं उसके लिए आया था, पावर सेल के लिए।
भाई गलत जा रहा हूँ मैं। Into the frozen wild। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को यहीं पे जाना है। मेरे को लग रहा था सेल मिलेगा वहाँ पे, बट ऐसा कुछ नहीं है। सेल वेल जो भी मिलेगा यहीं पे नहीं मिलेगा, नीचे। Easy, easy. नाइस, मशरूम मिल गए। Operation Enduring Victory. What did that mean? Whatever it was, doesn't seem to have turned out very well. पावर सेल यहीं पे मिलेगा, मेरे को पक्का पता है, और उसका भी मेरे को ध्यान रखना है, बिकॉज आर्मर लेने के लिए बहुत ज़रूरी है भाई वो। Keep that for later. ये क्या है? तो नीचे कैसे जाऊं? अच्छा, मेरे को ये तो नहीं पकड़नी कहीं। वेट ए सेकंड, यहाँ नीचे भी कुछ जा रहा। अबे गिर मत जाइए हो। ओके, यहाँ आने का क्या मतलब बनता भाई? कुछ ना कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे। ओ भाई क्या है ये? चढ़ ही नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे। सप्लाई ग्रेड थी। ओ भाई, मेरे को लगा पता नहीं क्या। और कुछ भी नहीं है, ठीक है, वापस चलते हैं। Must have been where the soldiers slept. Like the lodge in Mother's Heart, I guess. Log. Third Battle of California Marine. The swarm came in from the Pacific, and I don't know if it was the local Minutemen or the crazy 15th, but they'd set the garbage patch alight. Man, the sea was on fire. That stuff was... The first wave of bots came in covered in burning sludge. It bought us an hour or two of slaughtering them on the beaches before the swarm recalculated. We pulled them inland, back through the Kalmar sprawl. Dropped buildings on them, EMP'd the grid. Standard operating procedure. The last time I was in California, I was 5, 6?
The light was like that vintage social net filter that was everywhere in the 40s. Log. First battle of the eastern seaboard wall. Had a long run up to it. This was before Kalmar, and projections were a lot worse for the east. For 3 weeks, we kept getting scrambled out to some coastal burg to train Minutemen. It was always raining on account of Europe already being torched. Block after block of prefab barracks. They were still printing barracks right up until the hour the main force hit. The Minutemen? We ran combat drills with them in the streets where they'd lived, trying to pretend they might live to die somewhere else if they paid attention. Nothing worse than the ones who actually bought into it. Hopeful, pestering us with questions about Zero Dawn like we know something they don't. I swear, the more we do this, the more like the bots we are. Except they learn from every fight. And us? I'm not so sure. Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding Recalls, I've been instructed to remind you of Article 115 of base policy regarding unauthorized use of processor cycles. Specifically 115C. Any holographic simulation not directly related to operational training or efficiency. Consider yourself reminded and enjoy your gaming. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long and tougher every time. The swarm is getting better at predicting us. Less of us now. And we have to put in 10 times the work for everyone gone. Like a family business on hard times, only... This isn't my family. It's not with you. I still try to see you. The life we had. In the eyes of the people out there. I remember when they were glad to see us. When they still had hope. It all seems to be slipping away. I don't even recognize the places we're defending. The only thing I know I'm still fighting for is... you. The Zero Dawn to turn this around. Whatever the hell that is. Thanks for the mails, you. Time goes fast on active duty. 4 months with the wreck and recalls, I don't know, 20 drops. In and out of the West Coast, fighting with these civilian enlistees, scrappy guys and gals. Their training is basically, here's a DEW, when you see a bot, hit it. But somehow it's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse at Lithium Beach. Pulled out before its buddies arrived, but to see a big one go down. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're gonna have a shot at turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs, and everything will be the way it used to be. The furnishings were metal. How'd they ever get comfortable? It was the metal world. Guess they were used to it. ओ भाई दिला दो पावर सेल यार. Just one bed. Maybe their war chief's room. What the hell? Now what?
यहाँ से जाओगे कुछ भी नहीं है। नीचे जाना मेरे को। मैं पीछे देख लेना चाहूंगा एक बार। नहीं, कुछ नहीं छूटा। ये रहा भाई पावर सेल। Holographic interface. It must be some kind of code. Oh, that's informative. Three power lines, three sources. That makes one. ओके, नीचे कैसे जाऊंगा मैं? ओ भाई, That's two. One more. तो यहाँ पे सीढ़ी थी भाई। अच्छा नहीं, वहां से वहां नहीं जंप मार पाया ना मैं। ओके, Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. Didn't expect to hear nature poetry from the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. नॉर्थ। दोबारा से सुनो इसको। Hey, y'all wanted to know how I remember the geotherm system reboot? Goes like this. Bird flies north in summer, east in spring, west in fall, and south in winter. North, east, west, south. South. From the lips of Mike the GT Tech now, did you? As usual, I defy expectations. मतलब कि ऊपर, ईस्ट, राइट में, ये साउथ है। Okay, that did it. Sounds like that did it. ऑलराइट, कहाँ पे जाऊँ अब? ये रहा पावर सेल भाई, मिल गया। More clips. Must be another way in. Another power cell. I only need one more to get to that ancient armor I found. हाँ, एक चाहिए बस। It's them, all right. They're not looking for answers, just weapons.
It would blind me. You'll do. भाई मेरे को नहीं पता था यहाँ स्टेल्थ करनी पड़ जाएगी। अगर मैं इसको कंट्रोल कर लूँ ना, बट ये करप्टेड है भाई। ऑलराइट ऊपर भी जा सकता हूँ मैं। When we take Meridian, we'll lay apostates beside ancients down here. इनको अलर्ट किए बिना मैं निकल सकता हूँ यहाँ से? नहीं। I wonder sometimes what brought the old ones love, but maybe I don't want to know. Please tell me, this is it. All right. भाई करप्शन होगी थी। भाई स्टेल्थ एक बार गलत हो जाए ना उसका खामियाजा बड़ा गंदा भुगतना पड़ता है। It's them, all right. They're not looking for answers, just weapons. इस तरफ से चलना चाहिए।
Not sure what that was. I know you're there. I can smell it. Bad day for one of us. Let's get her. देख लिया भाई. ऊपर ही आ जाओ यार तुम लोग. अबे यार I will teach you to bleed. Now this thing's dangerous. वो भाई गिरा दे इसको. पता नहीं भाई स्टेल्थ तो यहाँ पे हो ही नहीं सकती. ये कैसे मर गया मेरे को ये नहीं समझ आ रहा. ये तो सही सलामत था एकदम. ठीक है पावर सेल तो मिल गया. बाकी मेन मिशन ही है. Now what? पानी में जब मारनी है क्या? नहीं ऊपर जाना है. ऊपर कैसे जाऊंगा भाई? अच्छा वहां सामने. एक मिनट ये क्या? Ames, I know I mail you too much. I'm just proud of what you're doing. Everyone back home is. We got moved inland 10 kilometers, just as a precaution, they say. School's still in session, so I get to keep my eye on Andres and Reggie. We never know where or when you're fighting, but when the VTOLs go over, all the kids run out and wave. I believe in you. I know nothing's ever going to be the same, but I believe in you. I believe in us. Ames, I don't even know if you're alive anymore. The mails I get from you, they say they're from you, but they don't sound... They sound recycled. Phrases put together, and you don't say anything about the news I pass on. The containment zone, the rebreathers, the rioting, One Earth.
What happened in the Dallas bubble, Ames, that wasn't the robots. They won't even give me a straight answer when I demand to know if you're still alive. They just say if your messages keep coming, then you're still operational. It's not fair, Ames. It's not fair that you won't be with me when the lights go out. I love you. That's so sad. Status report. 9th Mechanized Response Brigade, Commanding Officer Lieutenant Fiona Morrell. Unit morale continues to be adversely impacted by outbound engagements against the Pharaoh Plague, especially when said engagements occur in sectors where civilian guard enlistees have been heavily engaged. The scope and nature of fatalities suffered by civilian guard and unarmed civilians in these sectors defy description. And witnessing it is generating a pervasive sense of hopelessness in the unit. Accordingly, I once again request that deployments of the 9th MRB be temporarily refocused on facilities that are mission critical to Project Zero Dawn. And once again, I request an immediate update on the status of Project Zero Dawn's timeline. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real. I know it's been days, honey. I'm so sorry. Deployments are getting real long. We have to put into work for everyone. Like a family business. I still see you in the eyes of the people out there. They were glad to see us. They still had hope. I'm still fighting for you. Thanks for the mails, you. Time goes fast in active duty. 4 months with the wreck and recalls. Fighting with these civilian enlistees. Scrappy guys and gals. That's all coming together. Between us and the 6th MRB, we took down a horse. I hope you made the news, honey. Showed everyone we're turning this around. We just need to give Project Zero Dawn the time it needs. ओके ये कंसोल बचा भाई, लेकिन उससे पहले ये मैं सारे के सारे नोट पढ़ लेना चाहता हूँ। $2065 ओके। ओके इस तरफ क्या है? ओ भाई कुछ भी नहीं है तो Saving these for the trail. ओके हेल्प दे रहे हैं, इसका मतलब आगे फाइट होगी डेफिनेटली। ये नहीं खुलेगा जब तक मैं वो नहीं देखूंगा। What is this? That? It's a map. A map of what? Our world. The planet Earth, Aloy. It's not flat like you thought. Why would I think that? During eclipses, the shadow cast on the moon is curved. So our world is a globe. And it looks like this, from a distance. We'll discuss this another time. Back to the matter at hand. The Faro robots were spreading across the world, eating everything up. Somehow, Elizabeth stopped them before it was too late. But how?
राइट, अब हमें सारा राज पता लगेगा कि कैसे रोका गया इनको। और इस दौरान अगर मेरे को ठीक है, ये है क्या वेपन? ये कोई मशीन है? मेरे को तो मशीन लग रही है भाई कोई। The eclipse. Tampering with the metal devil. They don't think they can wake it, do they? Watch out! And this one can move. ओ भाई पीछे दरवाजा भी बंद हो गया। कह रहे लड़ो भाई, हम नहीं कुछ करने वाले अब। पहले ये छोटे मोटे लोग हैं, इनको मार दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। यार नीचे जाना तो ना मूर्खता होगी, मैं सही बता रहा हूँ। पहले इसकी कैनन तोड़ते हैं, लेकिन इसके बारे में पहले जानकारी हासिल कर लूँ पूरी की पूरी। कौन सी है कैनन इसकी? ओ भाई, मैंने पीछे देखा ही नहीं यार। Another kobish, and this one can move. ओ भाई प्लेटफॉर्म ही तोड़ दिया इसने तो। भाई सब कुछ तोड़ रहा है तो
अबे ये कौन सा अपन निकल गया? ओके, इसकी ये तो ऊपर से तो उड़ गया है, साइड वाली उड़ानी पड़ेंगी ये। ओ भाई पड़ गया। अबे नहीं, उठा। उठा। अबे यार ये कौन सा पोशन पी लिया मैंने? ये वैसे इतना मुश्किल नहीं है इस मशीन को मारना, क्योंकि एक तो स्लो फायरिंग है और ऊपर से ज़्यादा तेज मूव भी नहीं कर सकती। इससे ज़्यादा खतरनाक मशीन तो भाई वो थी, वो जो जिसको हम ओवरराइड भी नहीं कर पाए, करप्टेड थी वो। हेल्थ ले लेते हैं। Never know when I might need these. Nice. क्योंकि कुछ नहीं पता आगे कौन सा मिशन मिल जाए, इसलिए हेल्थ जरूरी है। नाइस, हेल्थ होगी पूरी। अब कहाँ चलना चाहिए? पूरा
ये क्या मेरे ख्याल से ऑडियो लॉग होगा नहीं डेटा पॉइंट है बायोस्फीयर डिग्रेडेशन अच्छा जी अब ये पढ़ के भी पता लगेगा किस वजह से ऐसा हो रहा था तो अगर नहीं पता तो अबे एक और जगह थी पीछे आई थिंक मैं मिस कर गया हूँ कुछ ये वाली बट ये तो डोर लगा हुआ भाई इसके अंदर जा ही नहीं सकते वैसे है इसके अंदर कुछ काम का लग तो नहीं रहा मेरे को इधर भी कुछ है लेकिन इनके अंदर हम जा ही नहीं सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं फिर और कोई ऑडियो लोग हो यहाँ पे यह है कुछ भाई No room. ऐसे कैसे नो रूम अच्छा हेल्थ पोशन के लिए ठीक है Thank you, Dr. Sobek. You can take a seat. What? You're going to thank her after what she just said? Dr. Sobek has made the situation very clear, General, and given us an option. We should all be thanking her. Oh, it's just... I mean, my God. Maybe take this discussion offline. There's not going to be any discussion. You saw the numbers. Now, Pharaoh, he'll foot the bill, but his money can't buy the time necessary to complete Zero Dawn. That can only be paid for in blood. Oh, come on. If we upgrade our fleet, crack the code somehow... Were you not listening? Robots can't do the fighting for you this time. When it comes to hacking, this rogue swarm is an apex predator. Anything automated you throw at it, they will hijack and take over. But this... We'd be throwing civilians into a meat grinder. Commanders, the enemy we're facing self-replicates faster than we can kill it. And it eats biomass as fuel. Zero Dawn is all we've got. So we put a railgun in the hand of every civilian strong enough to carry one, show them where the trigger is, and point them to the front? How the hell do we sell that? By giving them something to fight for. Zero Dawn. The top secret super weapons program that will save us. So long as humanity holds off the swarm long enough for Dr. Sobek and her team to finish it. The file I'm sending contains the war plan for Operation Enduring Victory. War plan? This is a war crime. It may be ugly, but it's something. Consider the alternative. Dr. Sobek, I've secured use of a decommissioned orbital launch base outside Bryce, Utah as the Zero Dawn staging area. Plenty of space there. When can you get started? I've already mailed you a list of alpha and beta candidates. Most are foreign nationals or subjects of corporate holdings, so extracting them... Leave that to me. You'll get your dream team. Count on it. Then I'll be off. भाई बिल्कुल What is that? What did these people do? What did Elizabeth do? ये मेरे को बिल्कुल मास इफेक्ट जैसा मिशन लग रहा था कि मतलब फीलिंग वैसे आ रही थी जैसे मास इफेक्ट खेल रहे हम उसमें भी ऐसे होता है मिशन ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर ही मिशन प्लान किया जाता है और फिर उसके ऊपर काम चलता है फिर उसके बाद ड्रीम टीम वो डिसाइड करते हैं भाई कौन कौन साथ जाएगा यहाँ भी वही चल रहा था तो मास इफेक्ट याद आ गई मेरे को Glad to be rid of that place. Now I just need to find the orbital launch base they talked about. I've checked my data and located the base. That's the good news. And the bad? It's directly underneath the Citadel. The palace at Sunfall. The capital of the Shadow Carja. Not exactly convenient. The palace is crawling with Eclipse agents.
many in positions of authority, all of them wearing focuses. The moment they see you, Hades will too. He'll issue another kill order, and this time, the entire Shadow Carja military will be after you. So, disable their focuses. You've done it before. It's not that simple. Too many focuses in one place, each of them communicating with each other and back to Hades, a whole network of them. Network? What's that? Imagine a vast, invisible web stretched across the land from end to end, connecting focuses together, allowing them to communicate over vast distances instantaneously. All right, so is there some way to cut the web down? Crash the network. Audacious. Yes, there is a way. A weak point in the network. Point the way. I'll send the location data to your focus. Head there, and I'll be in touch when you're close with more directions. What was Zero Dawn? What sort of super weapon did Elizabeth make? She stopped the machines, but not before the world she knew, her civilization, ended. Let's hope it won't come to that again. ऑलराइट, तो भाई ये हो गया कंप्लीट मिशन और हमें पावर सेल भी मिल गया, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। तो अब एक ही पावर सेल बचा है, उसके बाद हमें वो जो आउटफिट है वो मिल जाएगी और उसके बाद फिर इजीली हम कोई भी मिशन कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी आउटफिट वो बोलते हैं कि है। तो मेरे को वैसे आज ये भी करना था बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये करने का। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम पे और एक्सप्लोर करेंगे नए एरिया को भी और देखेंगे जितने भी पुराने मिशन बचे हुए हैं, बहुत सारे मिशन होंगे मेरे ख्याल से। एक तो ये इनटू द फ्रोजन वाइल्ड्स और ये की है फेटल इनहेरिटेंस। ये मेरे ख्याल से हुआ नहीं है क्या? ओके, ये अभी अधूरा पड़ा हुआ है चलो ये भी हो जाएगा वैसे। और मेन क्वेस्ट दो ही है हमारे पास, 19 लेवल का, ये 20 लेवल का। चलो ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम पे। तो दैट्स इट आज के लिए और मिलेंगे नेक्स्ट स्ट्रीम पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव फन।